The seeds of Mahatma Gandhi's vision, people building peace, are being nurtured in India in a school called City Montessori School, popularly known as CMS. Every activities of its founder, Dr. Jagdish Gandhi, have shown how parents and society can be involved, motivated, and molded in becoming partners for positive change in the lives of children. It is for the same that Dr. Gandhi convenes the International Conferences of Chief Justices of the World that aims to create a common enforceable world law to safeguard the future of the world's now 2.5 billion children and generations yet to be born. Insofar, 1,098 Chief Justices, judges, and heads of states from 126 countries have participated at this international conference. To hold discussions, share concerns, and to build consensus for world unity and peace. Vice President of the Cooperative Republic of Guyana, Mr. Khemraj Ramjatan, President of the Republic of Croatia from year 2000 till 2010, Mr. Stejepan Mesic, Prime Minister of the Republic of Lesotho from 1998 to 2012 and 2015 to 2017, Dr. Pakalitha B. Mosisili, Governor General of the Republic of Tuvalu, Sir Iacoba T. Italeli, Speaker of the Parliament, Republic of Mauritius, Mrs. Santibai Hanumanji, Speaker of the Parliament, Republic of Ghana, Professor Aaron Okai, former Chief Minister of Sabaragamua Province of Sri Lanka, Mr. Mahipela Hereth, Judge, International Criminal Court, Netherlands, Mr. Justice Osuji, Judge, International Criminal Court, Netherlands, Mr. Justice Antoine Kesia Mebe Mindua, and around 200 Chief Justices, judges, other legal luminaries and world peace promoters from 60 countries arrived at New Delhi, India. Honorable Mr. Justice Jeffran from Brazil at the 18th International Conference of Chief Justices. Welcome, sir. Oh, I'm very happy to be here. It was a beautiful and touchy welcoming we had last Friday. It's been such emotional days here. And events after that? And it was unforgettable. These last days, we've been meeting people from all over the world, people who are idealistic, people who are, I'd say, sincere fighters for peace, fighters for a more equal world. You see, here we are talking about all these days about gender equality, about the elimination of violence and discrimination of race, of religion, violence against children, all these things. We must fight not to have in the world anymore. So all the fighters coming together, where are they headed, in your opinion? Well, we must be headed for peace. We must be headed for a better world. You see, my country, which as India is a big country, very big in territory, not as big in population. Well, we are one of the biggest economies in the world, but we face a lot of challenges concerning inequality, concerning poverty, concerning education. And education it's improving, but it doesn't reach all the children the way it should reach, with quality, with the strength we need to have a more developed country and a more developed world. That's a contribution we should do. What kind of global governance we should look for if we think all that you mentioned, all the problems can be contained so well? Well, in fact, we've been improving
in terms of binding of effectiveness of international law, but we know there is too much to do, especially in the branch of human rights, which is, I'd say it's my branch. I'm a professor of human rights in Brazil. We still have a lot of problems concerning being effective. I mean, binding all the states to really adhering to international law. That's a problem we have. It's a problem we have, for example, when we see big countries as the United States getting out of some treaties, for example, treaties concerning the climate. It's something that worries us. But anyway, we should keep fighting. There's no other way. In the international agencies, the agencies for the refugees, the High Commissioner for the Refugees, the High Commissioner of Human Rights, all these agencies are traveling around the globe to enforce the states. My country, for example, every now and then receives some advice, some warning. Okay, you should, you country has to respect international law. As a late German Austrian author once said, Hans Kelsen, obeying international law means obeying contracts. Because the states, when they go to UNO, for example, and they promise to one another, the countries promise to one another that they are going to obey international law, they should obey international law because it's a contract. See? We say there is a Latin rule said, pacta sunt servanda. See? If we, I and you and he, if we settle a contract, we adhere to it and we should obey it. And where we are, kind of trying to bring everybody, trying so hard, calling in people to at least, make superpowers listen to us one day. At this juncture, as you rightly pointed out, America pulling out of conventions is truly worrisome. The environmental protocol that they recently pulled out of with the change of guard in America, we still remain hopeful, even if situation is as grim. Thank you so much, Mr. Justice. Thank you. I'd say once again, it's a dream being here. Okay. Thank you very much. Honorable Mr. Justice Ayari Khaleshia, former Judge Court of Tunisia. He's at the 18th Conference of Chief Justices. How is the conference turning out? Is it up to your expectations? I say that I find this conference very good, and by this conference we can make work together for combat terrorism, because every town maybe see terrorism act. So we have make one politic for all the weather to exchange everything that with that we can kill terrorism if it's possible. And we think that we need to make one legislation for all the world that we can use to succeed contre le terrorisme. I'm sorry si je peux vraiment parler le français. Perfect. Still, you have something to say about Dr. Gandhi doing this conference. Gandhi is. I would like to say for him, thank you very much, because for the accueil and for organization, and this conference has good repercussion
for in all the world. Thank you so much, Mr. Justice from Tunisia. He lauds Dr. Gandhi's efforts and it says it's a wonderful initiative to unite the world into a common order. Thank you. Thank you for you. Honorable Mr. Justice Mintwar from Netherlands at the 18th International Conference of Chief Justices of the World. So, Mr. Justice, welcome one more time, and the conference is concluding today. Thank you very much. Indeed, the conference is concluding today. And I'm very happy to having participated to this conference, which is very important, of course, in terms of international law and in terms of peace in the world. So, how do you rate Dr. Gandhi's efforts? I very much appreciate Dr. Gandhi's effort because it is something very incredible, very amazing to see here in the city of Lucknow, so many people, so many highly qualified and responsible persons coming from all over the world to participate to this endeavor. Which Dr. Gandhi is taking care of. Your contribution to the conference? I participated yesterday in a parallel event discussing about world governance, about the rule of law, and how we can contribute to the reform of the United Nations. And today, this morning, I delivered a lecture about the jurisdictions and the limitations of the International Court of Justice and those of the International Criminal Court. Of course, it is a very interesting subject and a complicated one. And for me, especially, it is more complicated because I'm a professor, a university professor, and I had to explain such a complicated topic to the young students of the City Montessori School. But I think it was good. Yeah. Reforming the UN, that's quite intriguing for one and all. So what were the suggestions you made? Of course, we have so many things to try to reform within the UN. But the most important thing, I think, for the moment, is how to reform the UN Security Council. Because, as you know, the UN was created in 1945 following the Second World War. And we can see that sitting at the Security Council are especially the victors of the Second World War. In the Security Council, we have 14 members, 10 are rotating, and 5 are permanent. Those five permanent members have the veto right. So it is something which could be defended 70 years ago, but today I can tell you many regions around the world are complaining. So it is a way, it is also something which could be reformed within the UN. Not so easy. Who would let the power go? It is very complicated because the Charter of the United Nations says to reform, to amend the Charter, we need the consent, the positive vote of the 5 permanent members. So I think it is very difficult to get such a vote if the objective of the vote is to take some powers from them. And you are right. Okay. So do we have an alternative? I don't know, frankly. Diplomats in New York and everywhere are discussing the matter. And for sure, we will have a outcome, a happy outcome, but for the moment, I don't know. Thank you so much, Mr. Justice. Reforming the UN is the need of the hour, but then it's a tough nut to crack. This is what you were mulling over a while back with Mr. Justice over here at the 18th International Conference of Chief Justices of the World. Thank you. Thank you very much. Thank you. Dr. Geeta Gandhi Kingdon, CEO of City Montessori School Society, on the 18th Conference of Chief Justices of the World. Welcome, Dr. Kingdon. Thank you.
It's something very relevant that is that Dr. Gandhi is convening year after year. How has it progressed till now? What more you expect from this conference? Your views. Um, what I would hope for from this conference is that the children of City Montessori School, the children of Lucknow, and in the wider world, when this message goes out through the medium of TV, radio, newspapers, internet, what I would hope is that the message goes out from this conference to the children of the world that this conversation, and to the people of the world, that this conversation that we need a world under the rule of law is too important a conversation to just leave into the hands of the politicians. As Mr. Mosisi Lili, who's the Prime Minister of Lesotho, who's attending this conference, said, for heaven's sake, don't leave it up to the politicians. Don't expect that politicians can deliver all this, the international governance structure that is needed. It is too important a conversation to leave only to the political leaders of the world. The political leaders of the world get their mandate from the people. So the people need to be convinced that we need these institutions that don't just argue for national self-interest, that transcend narrow national loyalties, and that recognize that international problems require international solutions, supranational solutions. And to build that climate of opinion, all our children and all the adults of the world need to be educated. And this conference is one small effort by a school to bring this forum, this issue to the platform, and to try and raise the profile of this issue, to educate ourselves and hopefully the people around us in the world, and also to use the good offices of the justices to promote this idea worldwide. Thank you so much. Thanks. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। तो परमात्मा ने तो शुरू से एक ही धर्म बनाया और यही बेसिक पर्पस है। द बेसिक पर्पस of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race and to foster the spirit of love and fellowship. तो हर धर्म का उद्देश्य क्या जो परमात्मा ने बताया? द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध भाई, हर धर्म का एक ही उद्देश्य क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव मात्र के हितों की रक्षा और मानव मात्र की एकता, एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप उसमें। और मानव मात्र में क्या हो? लव, स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप, फ्रेंडशिप, लव हो आपस में और फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो।
तो ये परमात्मा ने हर धर्म का एक ही उद्देश्य बना दिया। तो एकता और प्रेम के अलावा कोई उद्देश्य नहीं। तो एकता प्रेम की कमी हो रही है आज। तो आपके मन में ये हो ह्यूमन एजुकेशन, वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड, एक दिन दुनिया एक करूँगा, धरती स्वर्ग बनाऊँगा और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊँगा। मैं विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊँगा। तो ये भावना हर बच्चे में पैदा हो जाए CMS के, और ये उम्र आपकी बड़ी अच्छी है और बड़े होकर आप एकता के काम करें। तो ह्यूमन एजुकेशन हो गई। और डिवाइन ये कि परमात्मा ने जब से सृष्टि बनाई, अब वो इंसान बनाए, तो परमात्मा अब भाई अपनी संतानों को ज्ञान तो देगा, और जैसी जैसी ज्ञान की ज़रूरत होती है वो देता है। कई बार लोग उनको भूल जाते हैं, तो परमात्मा बार बार आता है, विभिन्न अपने संदेश वाहकों के जरिए अपना संदेश भेजता है। वो नहीं आता, लेकिन वो संदेश वाहक तैयार करता है, उनको सृजित करता है, उनको निर्माण करता है, नए नए सृजन करता है, नए नए प्रकार के। जैसे राम को सृजित किया, काहे के लिए कि मर्यादा का पाठ वो उनको परमात्मा ने भेजा, और जाओ मानव जाति में मर्यादा का पाठ पढ़ा दो। कृष्ण जी को भेजा, जाओ मानव जाति में न्याय का संदेश जाओ। तो संदेश वाहक है। ये क्या है? ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, मैसेज भेज लाने वाले। कहाँ से लाए मैसेज? परमात्मा से। तो ये कहलाते संदेश वाहक, और यू कॉल देम मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो परमात्मा मैसेज देने के लिए ही खास तौर से इनकी आत्मा को क्रिएट करता है। अदरवाइज तो अब तक रामकृष्ण बुद्ध मोहम्मद तो साधारण मनुष्य के रूप में पैदा हुए, और साधारण पुरुष के रूप में ये जन्म भी होता है, खाना वाना भी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ वही होता है, और देखने में साधारण पुरुष लगते हैं। लेकिन उनकी आत्मा इतनी महान होती है, पवित्र होती है, उसमें परमात्मा का संदेश आता है। अब आप कहेंगे परमात्मा सीधे ही क्यों नहीं आ जाता, क्यों नहीं बताता अपनी बात? तो परमात्मा तो अपने को तो शरीर बनाता ही नहीं, चाहे तो जितने शरीर बनाए, ये सब शरीर बनाए परमात्मा ने बनाए, लेकिन अपना वो तो आत्म तत्व है, वो कभी अपना शरीर धारण नहीं करता, वो कभी जन्म भी नहीं लेता, कभी मृत्यु भी नहीं होती, उसके कोई माता पिता भी नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो ये संसार में जो लोग आए उन्होंने देखा कि वो बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत वाला है, जिसने सूरज बनाया, चाँद बनाया। सूरज गर्मी देता है, चाँद शीतलता रात में देता है, हवाएं चलती हैं, पानी है, इतनी पृथ्वी है, इतने लोग हैं, सब कुछ बनाया। तो वो कोई ना कोई ताकत ज़रूर है। उसकी इबादत करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए, उसको याद करने के लिए नाम रख लिया। तो अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख लिया, अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब या रब्बुल आलमीन रख लिया, और हिंदी जानने वालों ने उसका नाम परमात्मा या ईश्वर रख लिया, और उर्दू जानने वालों ने उसका नाम खुदा या अल्लाह रख लिया। इसी तरह जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, लाखों लाखों भाषाएं दुनिया में, हर भाषा में उस भाषा के जानकार लोगों ने एक नाम खुदा का रख लिया। तो उसके तो लाखों नाम है, एक्चुअली तो उसका कोई नाम नहीं, तो लोग अपने हिसाब से उसका नाम रख लेते हैं, पुकारते हैं। तो ये जो धर्म के नाम पर दूरियां हैं, ये अज्ञानता है। इस अज्ञान को मिटाना है आपको। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस एंड ए क्रिएटिव प्रोसेस। इसका एम क्या है? इट्स एम इज टू डेवलप द कैपेसिटीज लेटेंट इन ह्यूमन नेचर। इसका उद्देश्य क्या है? जो शक्तियाँ मनुष्य के अंदर, आपके अंदर भरी पड़ी हैं, उनको निकाल के लाए। डेवलप द एनालिटिकल एबिलिटी, और एनालाइज करने की एबिलिटी पैदा करती है। तो एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस एंड क्रिएटिव प्रोसेस। इट्स एम इज टू डेवलप द कैपेसिटी लेटेंट इन ह्यूमन नेचर एंड टू कोऑर्डिनेट देयर एक्सप्रेशन फॉर द एनरिचमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। कोऑर्डिनेट देयर एक्सप्रेशन, और उसको करना क्या है, कैसे करना है? तो एक्सप्रेशन, कोऑर्डिनेट द एक्सप्रेशन फॉर द एनरिचमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का, समाज का आप लाभ पहुँचाएं, उसको एनरिच करें, उसको आगे बढ़ाएं सोसाइटी में।
इसके लिए आपको मिला। और ट्रू एजुकेशन क्या है? ट्रू एजुकेशन वो वही है, ट्रू एजुकेशन सच्ची एजुकेशन, रिलीजियस कैपेसिटीज, आपकी जो कैपेसिटी भरी पड़ी है उनको निकाल के, जैसे एडिसन बल्ब में निकाल के लाया माइंड से, ग्राहम बेल टेलीफोन निकाल लाया, दुनिया की हर चीज़ इसी माइंड से निकली। जब एडम ईव पैदा हुए तब न तो कोई किताब थी, न कोई कापी थी, और न कोई टीचर था, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, ह्यूमैनिटीज़ है, ये सब कहाँ से आए? सब मनुष्य के मस्तिष्क से निकला। हवाई जहाज इसी माइंड से निकला, पानी के जहाज इसी से आया, टेलीविज़न, कैमरा, घड़ी, ये पंखा, बिजली, पानी, सब कुछ वहीं से आया, माइंड से। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं ट्रू एजुकेशन रिलीजियस कैपेसिटी जो भरी पड़ी है उनको निकालती है। और देखो एक दो चीज़ें और ध्यान रखो, अब हम जब छोटे से थे तो हमारे गाल पे एक ने चांटा मारा, तो हम चाचा जी थे उन्होंने एक बात तो कह रखी थी, कभी बदला नहीं लेना, तो बदला तो नहीं लिया हमने उनसे कहा चाचा जी से कि देखिए इसने चांटा मारा तो क्या करना चाहिए हमको? तो बोले कि एक किस गाल पे मारा था? बोले राइट हैंड पे। कैसे कस के मारा? तो बोले बहुत कस के मारा। क्या हुआ? गाल लाल लाल हो गया ना? हाँ बिल्कुल लाल हो गया था। तो तुम उससे बोलो भैया एक झापड़ और लगा दो, ये तो हो ही गया लाल, ये भी लाल हो जाएगा, ज़रा हम अच्छे देखने में अच्छे लगेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने हम इससे ये कहेंगे आपकी बड़ी मेहरबानी, एक और लगाइए चुपत। अरे हाँ और क्या कहना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बात बताओ, उसने चाटा दिया, कोई पैसे लिए आपसे? नहीं पैसे तो नहीं लिए। देखिए चाचा जी चाटा मारा उसने तो क्या हुआ? तुम्हारा फ़ायदा हुआ ना। अरे तुम्हारे गाल तो लाल हो गए ना, और उसने गाली भी दी, तो गाली दी तो तुम्हें कुछ पैसे लिए तुमसे? नहीं पैसे तो नहीं लिए, फ्री में दी ना। अरे तो कहना चाहिए। और तुम बोलो वही सवेरे से आज तो किसी ने एक प्याला चाय भी नहीं दिया, नाश्ता भी नहीं दिया, आप पहले दाता हो, कुछ तो दिया, कुछ चांटे दिए, कुछ आपने गालियाँ दी, तो फ्री में दे दी। आप तो दाता हो, कुछ दिया ही आपने, कुछ लिया तो हमसे है ही नहीं, बिना पैसे के ही आपने दिया। आप तो दाता हो, दानी हो, आप तो महान हो। तो आपने तो इतना महान दान किया है, आपने गाली दी। वो लड़का हमने ऐसे ही बोला नेक्स्ट, जब उसने गाली दी हमें, तो बोले तुम्हारा क्या फ़ायदा? तो हमने कहा हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा। बोले क्या फ़ायदा? तो देखिए आपने गाली दी। बोले हाँ दी। हमने बर्दाश्त की? बोले की। तो मैंने कहा देखो हम में बर्दाश्त की भावना आई कि नहीं, गुण आ गया कि नहीं? देखो अभी तो हम छोटे हैं, तो बड़े होंगे तो बहुत संकट आएंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत लोग हमें तकलीफ पहुंचाएंगे, तो फ़ायदे में रहेंगे कि नहीं? धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए कि नहीं? गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ देम दैट एंड्योर विथ पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड। इफ एनीवन रिवाइल यू और ट्रबल टच यू इन द पाथ ऑफ गॉड, बी पेशेंट एंड पुट योर ट्रस्ट इन हिम हु हियर इट एंड हु सी इट। वो ईश्वर देखता भी है, सुनता भी है, न वो अंधा है, न गूंगा है, न बहरा है, वो देखता भी है, सुनता भी है, और वो हमारा इनाम बढ़ा देता है। गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ देम दैट एंड्योर विथ पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड। ईश्वर की राह में धैर्यपूर्वक जो सहन करते हैं, ईश्वर उनका इनाम या प्रतिफल बढ़ा देता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब गुण लाओ अपने अंदर। और कोई भी गाली दे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी कृपा, आपने गाली दी और फ्री में दी, और देखिए आपने कुछ लिया भी नहीं, और आप पहले दाता हो। सवेरे से आज किसी ने एक प्याला चाय भी नहीं दिया, नाश्ता भी नहीं दिया, आप पहले भाई हो जो आपने कुछ तो दिया। तो गाली दी तो फ्री में दी, तो आप तो दाता हो, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर सीखो।
Jai Jagat. This is P.K. Tiwari presenting CMS News for the day. The Hindustan Times and the Pioneer Right. Aditya Rai and Soumya Singh, two talented class 10 students of City Montessori School, Gomti Nagar Campus 1, brought laurels to their institution by winning the Best Team Award in an inter-school debate organized under the aegis of Association of Schools for the Indian School Certificate ASISC, UP and Uttarakhand at zonal level. Aditya Rai also won the title of Best Speaker in the same debate. Students of many schools participated in the contest, and in the junior category contest, Aditya and Soumya spoke with fluency, logic and efficiency, captivating the audience and impressing the judges with their knowledge. The Pioneer has also published pictures of the talented students. डेली न्यूज एक्टिविस्ट, प्रभात, जन संदेश टाइम्स, वॉइस ऑफ लखनऊ, राष्ट्रीय स्वरूप, दैनिक भास्कर, स्पष्ट आवाज, स्वतंत्र चेतना, राष्ट्रीय सहारा, आज, अवधनामा और पायनियर लिखते हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा के कक्षा 10 के विद्यार्थियों आदित्य राय और सौम्य सिंह की टीम को एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ASISC यूपी व उत्तराखंड के तत्वावधान में जोनल स्तर पर आयोजित अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में आदित्य राय ने सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब भी अर्जित किया है। प्रतियोगिता में कई विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें आदित्य और सौम्य ने जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता में तर्कपूर्ण, ज्ञानवर्धक, प्रभावशाली और धारा प्रवाह अभिव्यक्ति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के आयोजकों ने दोनों विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। अनेक अखबारों ने मेधावी छात्रों का चित्र भी प्रकाशित किया है। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड जय जगत।